को मिल रहा है और क्योंकि देखा जाए तो पूरे बीटीआर इलाके में 15 सीटें हैं, असेंबली कंस्टिट्यूंसीज है, तो वो 15 सीटें काफ़ी मैटर करते हैं कौन सरकार बनाएंगे दिसपुर में। लेकिन हाँ, ये 15 सीटों के अलावा और कहीं 10 या 20 सीट असम में है जहाँ माइनॉरिटी ट्राइबल वोट्स है या बोडो वोट्स है, तो वहाँ पे भी शायद बीपीएफ का ही फैक्टर काम करेगा। तो एक काफ़ी बड़ा एक इलेक्शन था इस बार, जो कि हम लोग सेमीफाइनल बोल सकते हैं 2026 के फाइनल से पहले। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ताज़ा जानकारियों के लिए। आप बने रहिए इस खबर पर, हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। खबर वो जो आपको सही राह दिखाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे। खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो अनदेखी और अनसुनी हो। खबर वो जो मुद्दे को उजागर करे, खबर वो नहीं जो सनसनी फैलाए। हर छोटी बड़ी खबर जिसका ताल्लुक आपसे हो, वो नहीं जो महज बड़े बोल हो। सटीक, बेबाक और निष्पक्ष खबरें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लाइव पर। नीम, हालधि, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठा, पाम तथा नारिकলৰ তেল আদিৰে প্ৰস্তুত কৰা পতঞ্জলি বাথ সোপ ব্যৱহাৰ কৰক। প্ৰাকৃতিক স্বচ্ছতা তথা সৌন্দৰ্য লাভ কৰক। It's all set, but feel is missing. Here comes the festive feeling. Enjoy festive Wali feeling with Yamaha. Buy now and get total savings up to rupees 18,532. একমাত্ৰ ডাইজেষ্টিভ বিস্কিট যাক বনোৱা হৈছে 100% আটাৰ সৈতে। ব্ৰিটেনিয়া নিউট্ৰি চইচ ডাইজেষ্টিভ এতিয়া 20 টকাত। সাফ চিকুণ মানে হৈছে হাইজিন। মাহৰ সেই দিন কেইটাত হাইজিনৰ লগতে আৰামৰ প্ৰয়োজন নহয়নে? একো টেনচন নোলোৱাকৈ কাম কৰিব মন নাযায়নে? এতিয়া আৰু মনে মনে নাথাকি চুজ কৰক। অত্যাধিক পাতল আৰু কোমল ছালৰ বাবে উপযোগী ডাঙৰ পাখিযুক্ত পেড, যি 8 ঘণ্টা আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ বন্ধু হৈ থাকিব। 3টা সাইজত উপলব্ধ। আদিয়া জৰুৰী। সুস্থ নাৰী, সুস্থ সমাজ। खबर वो जो आपको सही राह दिखाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे। खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो अनदेखी और अनसुनी हो। खबर वो जो मुद्दे को उजागर करे, खबर वो नहीं जो सनसनी फैलाए। हर छोटी बड़ी खबर जिसका ताल्लुक आपसे हो, वो नहीं जो महज बड़े बोल हो। सटीक, बेबाक और निष्पक्ष खबरें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लाइव पर। পবিত্ৰ আৰু শান্তিময় নামঘৰ ধূপৰ সৈতে সমাজৰ মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ এক প্ৰয়াস। নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰা সুগন্ধি ধূপকাঠি। নামঘৰ ধূপ, ভক্তিৰ আচল সুখ। Accurate, credible, responsible, no sensationalism, stories that matter. Your station, your voice.
Welcome to the special show, Dr. Kalam. Thank you, Zubeen. Welcome to this show. Thank you. How has the world changed? There's quite a bit of change. The one and only Sadhguru. I was not a child prodigy. Ustad Zakir Hussain Saab, welcome. Thank you. Jinat Manju, welcome. I was as a very westernized. India reigned hell. My guest today is the one and only John Abraham. There's a purpose in your life. Second chapter, something challenging. Everything in politics. Thank you very much, Vasveer. Point of View, the show that brings divergent voices, unfiltered views, and sharp analysis. Watch with me, Wasbir Hussain, only on Northeast Live. Your station, your voice. बढ़ते हैं अगली खबर पर। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व अपने पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। आज नवरात्रि का छठा दिन है, जिसे मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी को समर्पित किया गया है। सुनहरे रंग की इस देवी के 4 हाथ हैं, जिसमें अभय, वर मुद्रा, तलवार और कमल का फूल शामिल है। मान्यता है कि इस दिन मां के सच्चे मन से पूजा करने से जीवन से रोग, भय और दुख दूर होते हैं। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा किया और उनका उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। राज्य की कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। त्रिपुरा अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बनेगा। আগে তো আমরা সব সময় জানতাম যে দুর্গা পূজা is the puja of Bengali, কিন্তু nowadays we find that both the tribals and other peoples of Tripura, they also celebrate Durga Puja. So naturally unity in diversity, it proves, and we are all united, and for the development of Tripura we are working together. And I will give the message to all the peoples of Tripura that because of the blessings of our Durga Ma, let's move together to achieve our goal for prosper of the Tripura state. और दुर्गा पूजा के माहौल को देखते हुए त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने अगरतला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी धनखड़ ने कहा कि त्रिपुरा में करीब 3000 पूजा पंडाल हैं। इस साल इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए त्रिपुरा पुलिस के साथ 8000 त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। We will have around 3000 pujas in state of Tripura, which is an increase of about 10% over previous year. So as regards the deployment of police personnel, this year we are deploying around 8000 additional police and TSR personnel in all the 8 districts of the state, in addition to the district police already posted there. So we have made very elaborate and foolproof arrangements for the forthcoming Puja festival, and in border areas also we have very good coordination with BSF, and we are having joint patrolling in border areas with BSF, and we shall ensure that the Puja festival pass off peacefully in the state of Tripura. असम की खबर पर जुबीन गर्ग की असमय मौत की जांच को लेकर एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। आज निशिता गोस्वामी, शेखर गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को हाजिर होने का निर्देश जारी किया गया है। आज सुबह 11 बजे सभी को सीआईडी कार्यालय में बुलाया गया है और सीआईडी तीनों का बयान दर्ज करेगी। तो जुबीन गर्ग की असमय मौत की जांच को लेकर एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। आज निशिता गोस्वामी, शेखर गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को हाजिर होने का सीआईडी ने निर्देश जारी किया है। सुबह 11 बजे सभी को सीआईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीआईडी तीनों का आज बयान दर्ज करेगी।
राष्ट्रीय खबर लेह हिंसा के 3 दिन बाद पुलिस ने कल पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया है। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। वहीं हालात के मद्देनजर लेह में इंटरनेट सेवा को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। सोनम वांगचुक को लेह एयरपोर्ट पर सभी औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद विशेष विमान से राजस्थान के जोधपुर लाया गया। जोधपुर पहुंचने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा और कई सुरक्षा वाहनों के कावेलकेड के जरिए हाई सिक्योरिटी जेल वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां सोनम वांगचुक 24 घंटे कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। लेह पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने सोनम वांगचुक के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया। खबर खेल की। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया का विजय रथ जारी है। सुपर 4 के अपने अंतिम मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को सुपर ओवर में मात दी। टीम इंडिया ने इस मैच में पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम भी निर्धारित ओवरों में 5 विकेट पर 202 रन ही बना सकी। श्रीलंका के लिए पथुम निसांका ने 58 गेंदों में 107 रनों की शतकीय पारी खेली। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 2025 एशिया कप का पहला सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम सिर्फ 2 रन ही बना पाई। इसके बाद भारत ने 3 गेंद में ही मैच जीत लिया। इस तरह टीम इंडिया एशिया कप 2025 में अजेय रही। सुपर ओवर में भारत के लिए अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए। वहीं श्रीलंका के कुशल परेरा और दुष्यंत सनाका ने शुरुआत की। हैरानी की बात यह रही कि शतकवीर पथुम निसांका को सुपर ओवर में शामिल नहीं किया गया। तीसरे बल्लेबाज कुशल मेंडिस रहे। अर्शदीप ने पहली गेंद पर कुशल परेरा को आउट किया, फिर दूसरी गेंद पर 1 रन बना। तीसरी गेंद डॉट रही। चौथी गेंद में श्रीलंका ने दूसरा व अंतिम विकेट गंवा दिया। इसके बाद भारत के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आए। वहीं श्रीलंका ने वानिंदु हसरंगा को गेंद सौंपी। भारत ने पहली गेंद पर ही 3 रन लेकर मैच जीत लिया। सूर्य कुमार ने सुपर ओवर में भारत के लिए विनिंग शॉट खेला। Edge slipped there, gone. Shubman Gill with the catch comfortably. And the first breakthrough for India and for Hardik Pandya. I think he's up there with batters getting ducks in international cricket. Kusal Mendes. ये तोड़ देती है अकड़। পবিত্ৰ আৰু শান্তিময় নামঘৰ ধূপৰ সৈতে সমাজৰ মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ এক প্ৰয়াস। নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰা সুগন্ধি ধূপকাঠি। নামঘৰ ধূপ, ভক্তিৰ আচল সুখ। মায়ে নিজ হাতেৰে মঠি উলিওৱা ঘিৰ দৰে সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত পতঞ্জলি গাই গৰুৰ দেশী ঘি খাওক। নিজৰ পৰিয়ালক ভেজালকৰণৰ বিহৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। It's all set, but feel is missing. Here comes the festive feeling. Enjoy festive Wali feeling with Yamaha. Buy now and get total savings up to rupees 18,532. পবিত্ৰ আৰু শান্তিময় নামঘৰ ধূপৰ সৈতে সমাজৰ মহিলাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ এক প্ৰয়াস।
নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰা সুগন্ধি ধূপকাঠি নামঘৰ ধূপ ভক্তিৰ আচল সুখ Welcome to the special show, Dr. Kalam. Thank you, Zubeen. Welcome to this show. Thank you. How has the world changed? There's quite a bit of change. The one and only Sadhguru. I was not a child prodigy. Ustad Zakir Hussain Saab, welcome. Thank you. Jinat Manji, welcome. I was as a very westernized. India reigned hell. My guest today is the one and only John Abraham. There's a purpose in your life. Second chapter, something challenging. Everything in politics. Thank you very much, Vasveer. Point of View, the show that brings divergent voices, unfiltered views, and sharp analysis. Watch with me, Wasbir Hussain, only on Northeast Live. Your station, your voice. চাফ চিকুণ মানে হৈছে হাইজিন মাহৰ সেই দিনকেইটাত হাইজিনৰ লগতে আৰামৰ প্ৰয়োজন নহয়নে একো টেনচন নোলোৱাকৈ কাম কৰিব মন নাযায়নে এতিয়া আৰু মনে মনে নাথাকি চুজ কৰক অত্যাধিক পাতল আৰু কোমল ছালৰ বাবে উপযোগী ডাঙৰ পাখিযুক্ত পেণ্ট যি 8 ঘণ্টা আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ বন্ধু হৈ থাকিব তিনিটা সাইজত উপলব্ধ আদিয়া জৰুৰী সুস্থ নাৰী সুস্থ সমাজ Accurate, credible, Responsible. No sensationalism. stories that matter. Your station, your voice. Welcome to the special show, Dr. Kalam. Thank you, Zubeen. Welcome to this show. Thank you. How has the world changed? There's quite a bit of change. The one and only Sadhguru. I was not a child prodigy. Ustad Zakir Hussain Saab, welcome. Thank you. Jinat Manji, welcome. I was as a very westernized. India reigned hell. My guest today is the one and only John Abraham. There's a purpose in your life. Second chapter, something challenging. Everything in politics. We start the bulletin with all the updates from the Boro heartland. Well, the Hagrama Mohilari-led BPF looks poised for a stunning comeback after 5 years, as it has emerged as the single largest party in the BTC election, leading in as many as 28 of the total 40 seats. So the Pramod Boro-led UPPL meanwhile is leading in just 7 seats, while the BJP is a distant third with leads in 5 seats. But the most dismal performance was recorded by the Congress, as the party failed to win even a single seat in the election. While the final tally is likely to be declared as the day progresses, it is all but certain that the BPF will form the next government in BTR, with Hagrama Mohilari as the next CEM. As per sources, the BPF top brass held a crucial closed-door meeting around 10 p.m. last night to discuss government formation and their next course of action. And if we talk about the heavyweights, Hagrama Mohilari won from his home turf of Deborgaon, defeating UPPL's Kampa Borguari, but conceded to Kampa Borguari in the Chirangdwar constituency. Interestingly, Borguari was a vice president of BPF and former deputy CEM of BTC under Mohilari, and was a close aide and confidant of Mohilari. On the other hand, UPPL chief Pramod Boro also emerged victorious from his home constituency of Koibari. Meanwhile, celebrations erupted at the BPF headquarters in Kokrajhar, with party workers and supporters bursting crackers and rejoicing their party's splendid performance.
We are right now in front of BTC Secretariat, and right now we have with us a few supporters of the BPF who are busting firecrackers. So, इस रिजल्ट के बारे में आपको क्या बोलना है? Today, really very happy we are because आज के दिन में श्री हाग्रामा महिला रिसार्च जी ने अपना संख्या का रिश्ता लेके मेजोरिटी लेके सरकार गठन करेंगे, इसलिए हम बहुत खुश हैं। इसी वजह से आज यहाँ पे हम खुशी मनाने के लिए आए हैं। क्या बोलना है इस इलेक्शन के बारे में आपको? बस हम तो बीटीसी वासी को हम बोल रहे हैं, बस सब लोग आके जुलूस मनाए और हाग्रामा महिला रिसार्च को कांग्रेचुलेशन देना है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने इस बार हाग्रामा महिला को चुना है। Meanwhile, we have reactions from some of the candidates who registered victory. Listen in. BPF দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দেৱক কচুগাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে মোক যে তেখেতে বাছনি কৰিলে, তেখেতে আমাৰ এই ৰাজনীতিক পৰিস্থিতি মোকে এজন কেণ্ডিডেট হিচাপে বাছনি কৰাৰ বেলেগ সঠিকভাৱে আৰু সূক্ষ্মভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে তেখেতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে, আৰু তেখেতে লোৱা সিদ্ধান্তটো একেবাৰে কাৰেক্ট এটা সিদ্ধান্ত বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। তেখেতে দিয়াৰ দৰে মই আজি ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মানে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ এটা সমৰ্থন, সহযোগ আৰু তেখেতসকলৰ মৰম আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, যাৰ কাৰণে আজি এই BTC ইলেকশ্যনত মই ইমান শক্তিশালী আমাৰ যিবিলাক মানে চৰকাৰ পক্ষ যিবিলাকে মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছিলে তেখেতসকলকো হৰুৱাই মই আজি বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। মথনগুৰি সমষ্টিবাসী ৰাইজে আজি যি প্ৰতিদান দি পেলাই মোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ আহিল, মই জয়ী হ'লোঁ। এই জয় মথনগুৰি সমষ্টিবাসীৰ জয়, এই জয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ জয়, সকলো সম্প্ৰদায়ৰ সকলো পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলৰ জয়। সেইকাৰণে মই কান্দিছোঁ, কিন্তু সমষ্টিবাসী জনসাধাৰণে সকলো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে মোক আজি যেনেকুৱাকৈ মৰম দিলে, আশীৰ্বাদ কৰিলে, তাৰ কাৰণে সমষ্টিবাসী ৰাইজক মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই তাৰ লগতে সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ যাতে মোক আগন্তুক দিনবোৰতো সমষ্টিবাসী সকলো পৰ্যায়ৰ জনসাধাৰণে মোক পৰামৰ্শ দি পেলাই আগবঢ়াই লৈ যায়। মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ কোকলাবাৰী সমষ্টিৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজসকলক ধন্যবাদ যাচিছোঁ। তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আজি কোকলাবাৰী সমষ্টিৰ যিখিনি ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টটো 1302ত মই জয়লাভ কৰিছোঁ, আৰু সেইখিনি আৰু বহুত ভাল লাগিছে, আৰু ৰাইজক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আৰু সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া BTRC তেখেতকো ধন্যবাদ যাচিছোঁ, তেখেতৰ আশীৰ্বাদতে আমি সেই টিকেটটো পাই পেলাই এতিয়া জিতি গ'লোঁ। All right, now I'm being joined live with my colleague Arindam Das, who is right there in Kokrajhar. So Arindam, Hagrama Mahilais Party BPF has emerged as the single largest party. So Arindam, how's the mood there? You also have with you Missing Worry, reporter from Kokrajhar. And also Arindam, tell us in details about the big win and big loss of the candidates. Yes, Priya, this is definitely a big win or a stunning victory for the BPF, and a big comeback for the BPF after the setback in 2020. In 2020 also, BPF emerged as the single largest party, having 17 seats with them, but despite that factor, they could not form government because they were short of the magic number of 21. And the BJP and UPPL decided to form government, alliance government here in BTC. But this time, Hagrama Mahilari didn't leave any stone unturned, and in fact, he has brought for the party a stunning victory. 28 is the number that BPF has got. As I have mentioned, that 21 is the magic number. Any party having 21 seats or winning 21 seats can form the government on their own. But right now, they have far more than 21 seats, and that's the result on ground right now, and followed by the UPPL, who are reduced to 7 seats, and the BJP is reduced to 6 seats. So
Definitely, right now all eyes are set on when the government will be formed in BTC, and as Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma was giving an appeal or calling to both the parties, stating that whoever wins the maximum number of seats, BJP will give support and form an alliance government here in BTC. So right now I have with me our Kokrajhar correspondent Mijing. Mijing, what are the factors you think had worked for BPF this time? जैसा कि देखा जाए तो मेजोरिटी के लिए 21 सीट चाहिए था, और शुरुआत से देखा जाए तो जब 2020 में जो बीटीसी का जो गठन हुआ था उसमें इंटरिम 2 साल के लिए हाग्रामा था चीफ, और डिप्टी चीफ था संदन ब्रह्म, और 2005 के जो इलेक्शन है बीटीसी का पहला बार इलेक्शन में 39 सीट आउट ऑफ 40 सीट 39 सीट बीपीएफ हासिल किया था। और इसी तौर में देखा जाए तो 2010 में भी जो बीटीसी का इलेक्शन था उसमें 2010 में 30+ मिला था, और 2015 में जो बीटीसी का चुनाव था थर्ड टाइम के लिए उसमें एक मेजोरिटी मिलने के लिए एक कम था, 20 सीटें मिली थी, लेकिन इंडिपेंडेंट से एक लेकर के 21 हुआ था, मेजोरिटी बन गया था। उसके बाद बीपीएफ सिंगल लार्जेस्ट बन गया और उसके बाद सरकार गठन कर दिया। और आते आते 2020 में जब एप्सू एनडीबी के साथ जो शांति समझौता हुआ था उसमें 2020 का जो चुनाव था उसमें प्रमोद बोरो को 12 सीटें मिली थी, बीजेपी को 9, और हाग्रामा महिलारी के जो लीडिंग पार्टी बीपीएफ को मिला था 17। मेजोरिटी के बावजूद भी जो 2020 में जो हाग्रामा को सरकार गठन नहीं कर पाया था बीपीएफ, लेकिन उसके बावजूद भी हाग्रामा का साथ इतना ठास था यहाँ का लोकल का लोग, वो आज दिखाई दिया है। जो आउट ऑफ 40 सीट आज मेजोरिटी से ज़्यादा 28 सीटें मिला है, जो है कि सरकार गठन करने के लिए 21 सीटें ही चाहिए। और आज देखा गया है कि हाग्रामा महिलारी का साथ जो लोकल का जो सपोर्ट है और ख़ास करके जो माइनॉरिटी का सपोर्ट है वो हाग्रामा को 90 से 95% मिला है। तो ये इस इलेक्शन में मेजर लूजर्स कौन रहे? जो बिग कैंडिडेट्स थे, की कैंडिडेट्स थे, हैवीवेट कैंडिडेट्स थे, और कौन मेजर जो हैवीवेट कैंडिडेट्स जीते हैं? देखा जाए तो यहाँ पे लूजर की तरफ से देखा जाए तो अभी के जो डिप्टी चीफ थे और जो गोविंद बसुमतारी वो उसको, और एक आसाम का फॉर्मर 3 टाइम कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके संदन ब्रह्म, वो भी एक बड़ा नेता था, लेकिन काफ़ी बड़ा मार्जिन से वो हारना पड़ा, लगभग 5000 वोट के मार्जिन से हारा है। और बाकी जो प्रमोद बोरो भी जो चीफ के तौर में था वो दोतुमा कॉन्स्टिट्यूंसी में हारा है, हालांकि वो गोईबारी कॉन्स्टिट्यूंसी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता है, लेकिन दोतुमा में उसको हार का सामना करना पड़ा। तो अभी सरकार गठन कब होगी, क्या खबर मिल रही है आपको सोर्सेज से? सोर्सेज से ये खबर मिला है कि हाग्रामा महिलारी आज सारे पार्टी के टॉप लीडर्स और जितना भी जीत के आया है पार्टी एमसीएलए के तौर से उन लोगों को लेकर के आज एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रहा है। और बैठक कहाँ होगा उसका अभी भी जगह का कोई टारगेट किया नहीं गया है। So there you have heard that the next government will be formed by Hagrama Mohilari, and there is going to be a crucial meeting of the party where all the leaders and members of BPF will huddle and decide their future course of action, what will be their strategy. And as I have mentioned earlier, that the BJP from earlier only had said that whichever party, UPPL or BPF, gets the maximum number of seats, BJP will give support to that government. So there are high chances that there is going to be an alliance government of BPF and BJP, because the Chief Minister had also said that both the parties had remained close to the BJP. Right, Arindam, thank you so much for all those details. Show. Thank you. How has the world changed? There's quite a bit of change. The one and only Sadhguru. I was not a child prodigy. Ustad Zakir Hussain Saab, welcome. Thank you. Jinat Manju, welcome. I was as a very westernized. India reigned hell. Welcome. Everything right, the same Pakistani. China
My guest today is the one and only John Abraham. There's a purpose in your life. Second chapter, something challenging. Everything in politics. Thank you very much, Vasveer. Point of View, the show that brings divergent voices, unfiltered views, and sharp analysis. Watch with me, Wasbir Hussain, only on Northeast Live. Your station, your voice. নিম হালধি চন্দন এলোভেৰা মঞ্জিষ্ঠা পাম তথা নাৰিকলৰ তেল আদিৰে প্ৰস্তুত কৰা পতঞ্জলি বাথ সোপ ব্যৱহাৰ কৰক প্ৰাকৃতিক স্বচ্ছতা তথা সৌন্দৰ্য লাভ কৰক It's all set, but feel is missing. Here comes the festive feeling. Enjoy festive Wali feeling with Yamaha. Buy now and get total savings up to rupees 18,532. Accurate, credible, Responsible. No sensationalism. stories that matter. The Special Investigation Team or SIT constituted to probe the Zubeen death case has summoned actor Nishita Goswami, Shekhar Goswami, the singer's drummer and singer Amrit Prabha Mahanta to appear before it at 11 a.m. today. As per information, the SIT will record their statement. It has been learned that the SIT has also sent an email to the Singapore High Commission issuing notices to 8 Assamese expatriates in Singapore to appear before it by October 6th. So all 3 persons summoned have been named in the consolidated case based on the various FIRs filed over the deaths of Zubeen Garg. So SIT has been formed and Amrit Prabha Mahanta, Shekhar Goswami, Nishita Goswami will have to appear in the CID office today by 11 a.m. Meanwhile, the CID has issued notices to Shyam Kanu Mahanta and Siddharth Sharma as well. 11 Assamese expatriates in Singapore, directing them to appear before the CID office within 10 days. So failure to do so will invite lookout notices against them. The investigating team has also contacted the Singapore High Commission in this regard. The notice comes in after the SIT and CID teams conducted raids at the residences of Shyam Kanu Mahanta and Siddharth Sharma in Guwahati. As per reports, several incriminating reports and items were recovered from both the residences and they have been sealed by the authorities. Alright, moving on now. Well, Tripura Chief Minister Manik Saha inaugurated several community Durga Puja pandals across Agartala on Friday evening, marking the festive spirit in the state. So, speaking to reporters after the inaugurations, Chief Minister Saha said that though Durga Puja is traditionally regarded as a Bengali festival, people from tribal communities and other faiths also participate in the celebrations. The Chief Minister added that his government is committed to the state's development and expressed hope that the blessings of Goddess Durga would help Tripura achieve prosperity and progress. Durga Puja is the biggest festival in Tripura, with various clubs and organizations in Agartala and beyond organizing theme-based pandals that attract huge crowds each year.
আগে তো আমরা সব সময় জানতাম যে দুর্গা পূজা is the puja of Bengali, কিন্তু nowadays we find that both the tribals and other peoples of Tripura, they also celebrate Durga Puja. So naturally, unity in diversity, it proves, and we are all united, and for the development of Tripura we are working together, and I will give the message to all the peoples of Tripura that because of the blessings of our Durga Ma, let's move together to achieve our goal for prosper of the Tripura state. Tripura Director General of Police DGP Anurag Dhankar on Friday briefed the media at the police headquarters in Agartala on the elaborate security measures being put in place for peaceful Durga Puja celebrations across the state. The DGP informed that around 3,000 Durga Pujas will be organized in Tripura this year, an increase of nearly 10% compared to last year. To ensure safety, around 8,000 Tripura State Rifles personnel will be deployed in addition to state police forces and plainclothes officers. Highlighting the situation across the border in Bangladesh, Dhankar said the border security force and state police will carry out joint patrolling to prevent any untoward incidents, while additional troopers will also be deployed in vulnerable areas, while CCTV cameras and police watchtowers are being installed for close monitoring. In Agartala, traffic restrictions will be enforced from 5 p.m. to 1 a.m. during the 4 main days of Durga Puja to facilitate smooth movement and ensure public safety. We will have around 3,000 pujas in state of Tripura, which is an increase of about 10% over previous year. So as regards the deployment of police personnel, this year we are deploying around 8,000 additional police and TSR personnel in all the 8 districts of the state, in addition to the district police already posted there. So we have made very elaborate and foolproof arrangements for the forthcoming Puja festival, and in border areas also we have very good coordination with BSF, and we are having joint patrolling in border areas with BSF, and we shall ensure that the Puja festival pass off peacefully in the state of Tripura. In a strong diplomatic reply, Indian government sources have publicly rejected Prime Minister Shehbaz Sharif's claims at the 80th UN General Assembly. Islamabad's narrative of aggression from the Eastern Front was dismissed as entirely baseless, and officials accused Pakistan of attempting to dodge responsibility for cross-border terrorism to theatrics. But Sharif used his UN address to allege a May attack by India, accusing New Delhi of rejecting Pakistan's offer for an independent probe into the Pahalgam terror tragedy. He also claimed that the Pakistani Air Force had destroyed 7 Indian fighter jets under Air Chief Marshal Zahir Babar Sindhu's leadership. Repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sindhu, our Falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy.
However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its Prime Minister. So where does Trump's tariff position India? Well, Trump's 100% tariff focuses on branded drugs, so Indian generic exports are largely unaffected for now. India exports over 1/3 of the drugs consumed in the US, but most of these are generic medicines that are no longer under patent and are cheaper than branded versions. However, experts caution that the announcement could still affect market sentiment and investor confidence. Any tariffs on critical medicines could also push up healthcare costs and affect profit margins. There is also a risk that future tariff measures could extend to generic drugs. It is applicable to patented branded products manufactured outside US. It is not applicable to generics, and India supplies mostly generics product to US. India exports around $10 billion medicine to US. They consist primarily of generic products and APIs. So India is not likely to be impacted. We have been constantly advocating that generics should not be subjected to tariffs, as generics operate with rather thin margin, and if the tariff